And to kindly be seated. We'll be just starting in a short while. Thank you so much. As Honorable Chairperson Madam Rekha Sharma and our dignitaries for today, our esteemed speakers, Ms. Prakashi Tomar, Ms. Urmila Jamnadas, Ms. Soumya Swaminathan, Ms. Khushbu Sundar, Ms. Ravi Bala Sharma, and our moderator, Shri Aditya Raj Kaul is here with us today. Once again, a very good morning to all of you, and our sincere gratitude to each one of you for being with us here today. I'm happy to inform everyone that the NCW celebrated its 31st Foundation Day yesterday, and it was inaugurated by the Honorable Madam Draupadi Murmu ji. The theme for our Foundation Day this year is Sashakt Nari, Sashakt Bharat, where women are leading as architects of India's progress, growth, and development. Today, in continuation of that, we are honoring the outstanding spirit of womanhood. Under the able leadership and guidance of our Honorable Chairperson Madam Rekha Sharma, we will be celebrating the extraordinary journey of our trailblazing speakers who have transformed all obstacles into opportunities with their unremitting efforts, sheer determination, and deep resolve. They truly are the change makers who have made breakthrough changes in the society and are leading by examples today. We welcome all of them with our deepest admiration and gratitude. So let's start this incredible day with the most incredible women with a huge round of applause. Kali aur zyada chahiye. So first, we'll be starting with a round of felicitation, and I'll be requesting our Honorable Chairperson, Madam. Ma'am, यहाँ पे it will be difficult for them to felicitate the speakers one by one. First, I'll request Madam to felicitate Ms. Prakashi Tomar. आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए. Next, I'll request Madam to felicitate Justice Sujata Manohar Ma'am. I'll request Madam to felicitate Ms. Soumya Swaminathan Ma'am. I request Madam to felicitate Urmila Jamnadas Ma'am. Ms. Ravi Bala Sharma Ma'am. तालियां और जोर से. Ms. Khushbu Sundar Madam. And our moderator for today, Mr. Aditya Raj Kaul. Thank you so much, everyone. I request our Honorable Chairperson, Madam, to kindly deliver the inaugural address. Okay. So I now request all our speakers and our moderator to come up on the dais, please. Here, thank you.
Namaskar. Today we are once again celebrating the second day of our foundation day. Actually, yesterday we had a big program in Vigyan Bhavan again here, and Honorable President was our chief guest. We are celebrating this year Sashakt Nari Sashakt Bharat. और मुझे लगता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता सशक्त नारी का। आज जिस पोजीशन पे वो पहुंची हैं वो एक बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद, बहुत बड़ी लंबी लड़ाई के बाद वो वहाँ पहुंची, और हमें गर्व है कि हमारी राष्ट्रपति आज एक महिला है जो अपनी लड़ाई खुद लड़कर वहाँ तक पहुंची। आज हमारे पैनलिस्ट आपके सामने हैं। इनमें से पहली जस्टिस सुजाता वी मनोहर, शी वॉज द फर्स्ट जज of Bombay High Court, who later became a judge in the Supreme Court also. So where the judiciary is, in judiciary we still don't have many women, and we are still struggling to have our 50% quota in judiciary. She was the first one to reach to the Bombay High Court. So a big applause to her. I welcome also Prakashi Tomar ji. She is Shooter Dadi, known as Shooter Dadi. आप सबने एक फिल्म थी जिसमें आपने देखा होगा दो दादी शूटर, वो उनमें से एक कैरेक्टर ये हैं। आज इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनेंगे। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आज आपको सुनने को मिलेंगी जो अक्सर हम लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं और बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं, बहुत ही आप लोग भी इंस्पायर होते हो। वो लोग आज स्टेज पे बैठे हैं और ये मेरा भी, आई थिंक आई ऑल्सो फील दैट आई हैव टू लर्न सो मच फ्रॉम देम. So I also welcome Miss Urmila Jamandas. She has started her own business very late in life, that is Gujju Ben Ka Nashta. She is a women entrepreneur who started her. I also welcome Ravi Bala Sharma. She is 63 and yet very energetic, very passionate. And she is from Mumbai. I think she started her journey again, and when we say that age is just a number, she is one of the example, and she will be telling her own story, how she started late in life and has reached where now she is sharing this dais with so many other and going to tell her story. Miss Soumya Swaminathan, we all know about her. She is a scientist. She worked for research in tuberculosis and HIV. I welcome her on the stage. And last but not the least, Miss Khushbu Sundar, you all know about her. We have seen her in the movies. We have heard her as a politician. She has a long career in politics also. So I welcome Miss Khushbu on our stage. And last, one male in so many women, I welcome Aditya. He is like now family member to NCW. And though I have personally met her maybe twice, but I feel that I'm very much connected to him. And I follow him. In fact, I am his follower on Twitter. And he really inspired others. So he will also tell his story, because I think he should share his own story. He has a very interesting story, life story. And when I'm talking about the story, I think हर महिला की एक कहानी होती है.
चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, और उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए उसको कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है, किस किस दौर को देखना पड़ता है, ये सिर्फ वो जानती है, और कई बार वो बता भी नहीं सकती। कुछ लोग बताते हैं और कुछ लोग बताते भी नहीं हैं, और हमें लगता है कि हमें ये शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वी इंस्पायर ईच अदर. Today morning only I wrote one line when I send good morning to my family members only, and I write those small little messages, and I just wrote myself that maybe there is no path, you can't see a path in front of you, maybe you are the one who is paving that path, walking for the first time on that route and paving for others. Just don't stop walking, just move, and you will see a new path for you. So these are the women. These are the women who walked that path for the first time and paved the ways for others. So we must learn from them, from their stories. In fact, yesterday when I was sharing the stage with Honorable President of India, I was remembering a time in politics when I just started in politics in Haryana, and Haryana has a mindset that women, at that time especially, I'm talking about 25-30 years back, I was just 32-year-old when I started in politics, and they used to remove a chair when I used to go to the stage so that I should not go on and sit on the stage. That was the time, and yesterday was the time when I was sharing the stage with President of India. उसके बीच में कितना लंबा रास्ता तय किया शायद मुझे ही पता है, और किसी दिन मैं अपनी एक किताब में भी लिखूंगी कि कहाँ कहाँ से गुजर गए, किस दौर से गुजरे. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप झुको नहीं, आप डरो नहीं, आप अपने मन में जो ठान लो वो करो. क्यों मैं ये इसलिए कह रही हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट, दे शुड लर्न दैट दे हैव टू मेक देयर ओन डिसीजंस, they have to walk their own path. Today is the day for them. I will not take much of time. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your inspiring words and your inspiring journey. जैसे आपने कहा कि हर महिला की एक कहानी होती है, उन्हीं कहानियों को हम सुनने के लिए हम यहाँ आज आए हैं. Stories of aspirations, stories of ambitions, stories of adversities, and stories of achievements. With this, I hand over the floor to Aditya Raj Kaul. He is our moderator of the most awaited session. The session is all yours now, Aditya. Thank you. Thank you, Devalena. Namaskar. My name is Aditya Raj Kaul. और मुझसे पूछा गया यहाँ पर, रेखा शर्मा जी ने मुझे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है कि 7 इतने वरिष्ठ महिलाएं यहाँ पर हैं और आप अकेले यहाँ पर पड़े हुए हैं. तो मैंने बोला कि मुझे भी ये ख्याल आया. I thought about this at the very beginning when she called me for this event. But then I thought to myself that I'm not the odd one here. I'm the lucky one here. क्योंकि मुझे महिलाएं मेरी ज़िंदगी में खुद बहुत जो है हद तक इंस्पायर किया है. मेरी माँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू नो, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल, बट मैं कश्मीर से हूँ, और कश्मीर में जब टेररिज्म शुरू हुआ तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ा, घर वहाँ पर छोड़ना पड़ा, और हम कैंप में रहे, एक रेफ्यूजी कैंप में. तो कई महीनों तक हम एक रेफ्यूजी कैंप में थे. और फिर जब हम दिल्ली में आए तो मेरी माँ को सबसे पहले एक सरकारी नौकरी मिली, और उन्होंने अपने बलबूते पे लिया पूरे परिवार को, और पूरे परिवार को चलाया. और एक कमरे में हम लोग रहते थे, और उस कमरे में एक खिड़की भी नहीं थी, और वहाँ से मेरी माँ ने पूरी शुरुआत की. आज मैं एक चैनल का एडिटर हूँ. मेरी माँ रिटायर हुई अभी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के एडिटर इन चीफ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी वहाँ पर. तो चाहे वो मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, इवन मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो सब लोग मुझे कई हद तक मुझे लगता है कि इंस्पायर करते हैं हर मोमेंट पे, और सबको इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए. और
when we speak about women, I'll, of course, through the questions that I ask these wonderful 7 women who are sitting next to me, when we think about women, we think about love, we think about emotions, we think about sacrifice. But the most important and significant thing about women is strength, is Shakti. And that is what, really emanates from the Indian culture, from the Indian ethos, from the Indian heritage. There are multiple examples through the freedom movement and even before that. Several scholars, poets, historians, and queens that have come in from India who have inspired us and who continue to inspire us. And I think that this was more important and more significant. And such small steps really help in building the confidence, not just among women, but men, that we are equals. We need to treat each and everyone as equals and continue to inspire and give opportunities. तो मुझे लगता है कि पहला सवाल, क्योंकि 7 ऐसी महिलाएं हैं मेरे पास और मैंने जितना बोलना था मैंने बोल लिया, अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए उनके पास जाऊंगा. And we have a shooter Dadi, but we also have a dancing Dadi here. We have an amazing politician, actor turned politician, but we also have somebody who has shown conviction of courage through the pandemic as the chief scientist of World Health Organization. We also have the first woman judge of the Bombay High Court, the first Chief Justice of the Bombay High Court, and one of the significant ones at the Supreme Court of India. And I will come to her as well. And of course, सबसे पहले मैं उर्मिला जी के पास आऊँगा. और नमस्ते उर्मिला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो शुरुआत थी वो कैसे हुई, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि जो बच्चे हों, चाहे उनकी उम्र 25-30 के आसपास हो, वो तो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, वो तो कुछ करके कहीं से कैपिटल लेके पैसा लेके कहीं से करते हैं. लेकिन आपको ये शुरुआत करने का मौका कहाँ से मिला और फिर ये कितना स्प्रेड जो हुआ, जो इतने सब लोग आपसे खरीदने लगे, ये कैसे हुआ? इसके ये ऊर्जा का स्रोत कहाँ से? मैं आपको बताती हूँ. मैं आपको बताती हूँ, जिंदगी में मैंने बहुत संघर्ष किया. मैं आपको बताती हूँ, जिंदगी में मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत सारे दुख उठाए. मेरे 3 बच्चे चले गए, इसका मुझे बहुत दुख अभी भी है. ऐसे करते करते मेरी जिंदगी आगे चली. और जब कोरोना आया तब सबकी परिस्थितियाँ बहुत खराब थी. सब दुकानें बंद, होटल बंद, कहाँ से कहाँ आदमी लोग जा रहे थे, क्या करना क्या नहीं करना, वो समय हमारे लिए बहुत कठिन था. फिर हमने सोचा, यानी मेरे पोता हर्ष ने सोचा कि दादी चलो हम कुछ ना कुछ करते हैं. मैंने बोला ठीक है, चलो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ. तो उसने मुझे कहा कि चलो हम नाश्ता बेचते हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं, अचार बनाते हैं, अचार सबको देते हैं. मैंने बोला ठीक है. ऐसे करते करते हम एक क्लाउड किचन और एक रिटेल शॉप भी हमने चालू किया. ये समय हमारे लिए बहुत ही कठिन था. मैं कभी कभी 12 घंटा 15 घंटा भी काम करती थी. ये मेरे लिए करती थी और मुझे सबको मेरा बनाई हुई चीज़ सब तक पहुँचे, ऐसे मेरी इच्छा थी. और एक तो कोरोना का काल, नहीं इसमें कुछ मिलता था. दुकान सुबह 11 बजे तक खुली रहती थी, बाद में बंद हो जाती थी. वहाँ से मेरी स्टोरी शुरू हुई, गुज्जू बेन का नाश्ता. ये नाम एक गृहिणी के लिए है, मतलब एक लेडी के लिए है. सबके घर में रहती है गुज्जू बेन, मैं अकेली ही नहीं हूँ. सब लोग खाना बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, लेकिन ये गुजराती गृहिणी का गौरव है कि सब लोग अच्छा खाना बनाते हैं और उसे कहते हैं गुज्जू बेन. ऐसे करते करते बहुत ही
मुसीबत के साथ सामना करके मैं आगे बढ़ी। मैं बोले हमें थकना नहीं है, हमें आगे जाना है, बढ़ना है और नारियों को भी जगाना है कि अगर ये उम्र में मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। इसके लिए मैंने ठान लिया कि चलो, और मेरे साथ मैंने और 5-6 लेडी को भी लिया। अकेले मेरे से तो इतना काम नहीं हो सकता है, तो 5-6 लेडी को भी लिया और हमने ग्रुप बना बना के साथ में मिल के, नहीं तो बॉम्बे की 15 से 20 सोसाइटी में हम सुबह नाश्ता पहुंचाते थे, शाम को खाना पहुंचाते थे। ऐसे करते करते हम आगे आए थोड़े। और ये सब में मेरे पोता हर्ष को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे बताया कि दादी अगर आप में हिम्मत है तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। और एक ही बात मैं आप नारियों को बताती हूँ, मेरे भाइयों को, मेरे बच्चे को, मेरी बेटियों को, गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, जल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीत एक साक्षी पथ है जिसका कोई सार नहीं। जी, अब गुज्जू बहन का नाश्ता तो हो गया और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी कि इतनी मुश्किलात के बावजूद आपने जो पहल दिखाई, आपने जो शुरुआत की, आई थिंक वी ऑल सैल्यूट यू कि कैसे आपने किया और बाकी लोगों को आप इंस्पायर कर रही हैं। और क्योंकि हम पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सेकेंड इनिंग्स की, तो एक और महिला हमारे समक्ष हैं अभी, रविबाला शर्मा जी। मैं आपके पास आना चाहूँगा ये जानने के लिए कि ये सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत कैसे हुई। हाँ, पैंडेमिक तो हुआ, लेकिन पैंडेमिक में ज़्यादातर लोग निराश थे और एक जो है होप होती है वो खो दी थी पूरी तरीके से। तो आपने कैसे, और मैं आपको आज मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कि पिछले कई महीनों से मेरी जो मदर हैं वो रविबाला जी के वीडियोस मुझे भेज रही हैं। मुझे पता नहीं था कि इनका नाम रविबाला शर्मा है, लेकिन इनके वीडियोस इतने पॉपुलर हैं इंस्टाग्राम पे, अक्रॉस सोशल मीडिया। तो ये वर्सेटाइल जो आर्टिस्ट आप बनी, ये पहले से था? बिकॉज यू आर अ डांसर, यू आर अ सिंगर एंड एट द सेम टाइम यू कैन प्ले मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स। ये हुआ कैसे और इसकी कहानी प्लीज आप बताएं। नमस्कार सभी को। और पहले मैं जो NCW की जो हमारी मैम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आप लोगों से मिलने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्चुअली मैं एक संगीतकार के घर में पैदा हुई। मेरे फादर संगीत उन्होंने ही सिखाया मुझे, और वहाँ उन्होंने मुझे क्लासिकल और तबला, सितार उसकी क्लासेस देते थे मुझे। लेकिन मेरा जो शौक था, डांस का शौक था, वो शायद मैं उसकी क्लास नहीं ले पाई। कभी कभी जो मेरे यहाँ शिक्षक आते थे कथक नृत्य के, मेरी दीदी को सिखाते थे, तो मैं उनसे शायद थोड़े थोड़े स्टेप सीख पाई और बेसिक चीज़ें मैंने सीख ली, क्योंकि संगीत में सुनने से ज़्यादा आता है। तो मैं वो सुनती थी, देखती थी, और मैं एक मन में जो था कि मैं कभी डांस करूं, जो मुझे कभी मौका नहीं मिला। और मैं संगीत में संगीत प्रवीण करके तबले में किया, मैंने वोकल में किया, और मैं एक संगीत शिक्षक के रूप में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में रही। वहाँ मैंने 27 साल काम किया। लेकिन मन में कई बार होता था कि मैं गाना भी गा रही हूँ, तबला भी बजा रही हूँ, लेकिन डांस नहीं कर पा रही हूँ। तो एक पैशन जो था वो मुझे बार बार बीच में कहता था कि क्यों मैं डांस नहीं कर पा रही। तो मैं जब मैं रिटायर हो गई, तो रिटायरमेंट के बाद मैं मुंबई चली गई अपने बेटे के पास। मेरा बेटा मुंबई रहता है। वहाँ 6 महीने जाने के बाद मन तो नहीं लग रहा था मेरा मुंबई में। 6 महीने के बाद लॉकडाउन हो गया। अब ये लगा कि क्या करें, बेटा भी और मैं भी, हम ये सोचे कि हम लोग इस टाइम में क्या करें। तो बेटा कहने लगा, मम्मी आपका डांस का बहुत मन होता था कि मैं डांस करूं, तो क्यों ना हम वीडियो बनाते हैं और आपका मैं प्रोफाइल बनाता हूं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तो हम वीडियो बना के डालते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया, जो कि एक मैडम होती थी किरण शर्मा जी, उन्होंने मेरे से वीडियो मांगा था कि हम एक कंपटीशन कर रहे हैं सीनियर सिटीजन का, आप उसमें वीडियो भेजो। वो मैंने पहला वीडियो उनको दिया, और वो वीडियो मेरा इतना वायरल हुआ। वो गाना था कांटों से खींच के ले आ चल।
वहीदा रहमान जी पर फिल्माया गया था। वो मेरा वायरल इतना हुआ कि लोगों ने पसंद किया और उन्होंने बोला कि हम आपका डांस और देखना पसंद करेंगे, आप जो है हम डांस की वीडियो बनाइए और भेजिए। तब से मैंने फिर वीडियो बनानी शुरू की और डालनी शुरू की। और लोग कहते थे मेरे को कि आप इस उम्र में डांस कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ। कुछ कहते थे कि आपकी एज डांस करने की नहीं है, आप मंदिर में जाइए पूजा करिए। अब मैं क्या बताऊं कि मैं पूजा करती हूँ या नहीं करती हूँ, मैं उसको डालूं या नहीं डालूं, मैं क्या क्यों बताऊं कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरा पैशन है और जो मैं चाहती थी वो मुझे अवसर मिल रहा है, तो मैं क्यों ना डांस करके जो वीडियो बना रही हूँ, मैं खुश हूँ। जो मेरे को देखते हैं, जो मेरे डांस को देख के खुश होते हैं, तो मुझे लगता है कि हम जो अपने मन की चीजें करते हैं, पूरी लाइफ हम महिलाओं ने अपने परिवार और बच्चों को, अगर जॉब में रहे तो जॉब को किया है, मन से किया है, लेकिन जो अपने अंदर जो अंदर रह जाता है एक कि हम ये नहीं कर पाए, जो हमारी लाइफ में हम करना चाहते थे कभी नहीं कर पाए, तो हम उस टाइम कर सकते हैं जब हम अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो ये हमारा अपना टाइम होता है कि हम अपने लिए टाइम दें कि हम क्या है। और एज बुढ़ापा कुछ नहीं होता, ये समाज ने बना दिया या हम लोगों ने बना दिया कि अब इस एज के बाद हम घर में बैठ जाएं, बस बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनको देखते रहें। जो हमारा मन करता है करने का कि हम डांस करें या पेंटिंग करें, स्पीच करें, वो सब कुछ बंद हो जाता है। तो हम जो सेकेंड इनिंग में हम आए हैं, तो हमारी जो अंदर इच्छाएं रह गई हैं, हमें उसको करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, जिम्मेदारी तो चलती रहती है, लेकिन जब अगर हमारे पास समय है, और इस समय हमारे पास बहुत समय होता है जो हम अपने पैशन को पूरा कर सकते हैं और लोगों को खुशियां दे सकते हैं। और एक ये कि अपने पैशन पे कभी भी बुढ़ापे को नहीं आने देना चाहिए, अपनी एज को नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच रविमाला जी। और मैं आप सबको विनती करता हूं कि आप इंस्टाग्राम पे पक्का फॉलो करें, क्योंकि इनके जो वीडियोस हैं दे आर मोर यूथफुल देन द वीडियोस ऑफ द यूथ। तो आपको ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और इंस्पिरेशन मिलेगी। At this point now, I would like to go to Soumya Swaminathan ji. The first question that really comes to mind, irrespective of the women issues or the inspiring stories that we are hearing right now, is about the pandemic. And what happened during the pandemic while you were in Geneva as the chief scientist of WHO. But I want to ask you a two-part question, ma'am. One, that you were the head of the ICMR here. How challenging and difficult was that role for a woman chief of the ICMR? Because I've heard, correct me if I'm wrong, that you said once that it was an all man's world and it was very difficult for you to understand or absorb that will men really take you seriously. So what do you have to say about your time at the ICMR, and was it any different from your time as the chief scientist of WHO at Geneva? Thank you. Thank you, Aditya, and must thank the NCW for this opportunity. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और कल बड़ा इंस्पायरिंग फंक्शन हमने अपने राष्ट्रपति जी से भी उनकी कहानी सुनी। तो ये ICMR के बारे में आपने पूछा, तो आई वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फ्रॉम 2015 to 17. Basically, I wanted to do research. Ever since I took medicine, my interest was in research. मुझे अनुसंधान में ज़्यादा दिलचस्पी थी. That itself was something which used to make people comment कि ये अनुसंधान क्यों करना चाहते हैं आप? पेशेंट देखिए, डॉक्टर हैं तो आपका काम तो हॉस्पिटल में होना चाहिए. तो there was discouragement even at that stage from seniors कि ये बड़ा unusual line है. But anyway, I persisted. And I used to work on tuberculosis. तो हमारा इंस्टीट्यूट चेन्नई में था and I was a young researcher there. तो कुछ साल मैं HIV पे, उस समय HIV हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी 1990s में, और बहुत कम लोग उस पर काम कर रहे थे. इनफैक्ट पेशेंट्स को देखने वाले डॉक्टर बहुत कम थे, इतना स्टिग्मा था, डिस्क्रिमिनेशन था. तो मेरे बॉस ने उस समय मुझे कहा कि तुम HIV और TB के ऊपर काम करो, इंडिया में बहुत काम है करने को, और
ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उस पर जब काम शुरू किया तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम दिल्ली जाओ और अपने जो फाइंडिंग्स हैं रिसर्च के वो प्रेजेंट करो। तो शुरू में जब मैं दिल्ली आई, आई वॉज अ यंग रिसर्चर, शायद मैं 35-36 साल की थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि उस कमरे में कोई मेरी तरफ नहीं देखता है, नोबडी टेक्स सीरियसली, कोई बोलने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे। एंड इट वॉज यूजुअली अ रूम फुल ऑफ ओल्डर मैन। जो कमिटीज़ हमारी बैठती हैं ज़्यादातर, उसमें आप देखेंगे कॉम्पोजिशन तो अभी भी अब थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, बट बहुत सीनियर मैन आपको ज़्यादातर दिखेंगे। तो वो आपस में बात करते थे। और दूसरी बात, जो हम साउथ के जो आते हैं या नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं, उनको ये महसूस होता है कि कई बार हिंदी में बातें होती, यू नो, एंड हिंदी इज़ अ गुड, एवरीबडी शुड लर्न इट, बट कई लोगों को नहीं आता है। तो माई हिंदी वॉज ओके बिकॉज आई स्पेंड टाइम इन दिल्ली, बट कॉलीग्स ऑफ माइन फ्रॉम साउथ, they often used to say that we feel left out और बोलने की opportunity फिर कम मिलती है। तो we have to be sensitive to many things, you know, when we are such a big country, such a diverse country. And अभी रवि बाला जी बोल रही थी कि older women के बारे में थोड़ा जैसे you know, there is a mindset, people want to slot you in. अगर आप older हैं तो आप ये सब करिए, अगर younger हैं तो चुप रहिए, तो फिर opportunity कैसे मिलेगी, you know? तो इट वाज डिफ़िकल्ट। और मैं पहली बार जब वापस गई, मैंने अपने डायरेक्टर से बोला कि आप मुझे मत भेजा करो मीटिंग्स में, दिल्ली में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सुनता तो है नहीं, तो व्हाई डोंट यू गो, यू आर अ मैन, यू आर अ डायरेक्टर, पीपल विल लिसन टू यू। एंड ही सेड नो, यू आर द एक्सपर्ट, you have to go, and I don't know as much about the subject as you do. So this is how actually my confidence was built, and I would credit a man. He was my mentor, you know. Men have a very important role to play in both mentoring and giving opportunities, because many opportunities would come to the man as the head of the organization. If he steps aside and sends a woman colleague, that is how you build leadership, you know, among women. So it's not enough to pay lip service. We have to have very concrete action plans. How do you build the leadership? Because I work in the health field, and even in ICMR or even outside, generally, if you look at health, the majority of workers are women. Nurses, Ashas, Anganwadi workers, ANMs. But leadership mein kaun hai? You know? So women get stuck at a certain level, and we have to first recognize and then do something to really bring it up. So in my time, I was very conscious of the fact that I wanted to mentor and train and provide opportunities for younger women, particularly, to have an opportunity to come and have a national role or a leadership role. अक्सर ये भी होता है that women have to obviously think about their families. There is a stage in the career when your career advancement is clashing with your responsibilities at home or with your partner's career. And then there has to be a give and take. And luckily I see today it is changing. Young men are willing to have a dialogue with their spouse, their partners. कभी women का अच्छी opportunity मिल रही है तो उनको पहले priority देना चाहिए, उनको लेना चाहिए. But most of the time it happens the other way. I was very lucky that I had very, very supportive husband. So again, I give full credit. The men in your life actually make a lot. I agree that the women जो अपने हमारी माताएं होती हैं उनसे हम बहुत सीखते हैं, उनसे शक्ति मिलती है हमें. बट अगर जो men हैं हमारे लाइफ में, अगर वो सपोर्ट ना करें, फादर से शुरू करके और हस्बैंड और बाकी भाई बेटे वगैरह आगे बढ़ने के लिए मुश्किल है. When I went from ICMR to WHO, of course at that time we never knew कि ऐसी कोई चीज़ आएगी, पैंडेमिक हो सकता है. पैंडेमिक नाम भी नहीं सुना होगा most people. तो एकदम से 2019 में जब मैं चीफ साइंटिस्ट बनी, वहाँ it was a new role. I was very excited कि WHO में there was a new role. I was the first chief scientist, and I thought it's an opportunity to chart a path forward where science becomes, you know, the center of all health. And then 9 months later, we had the pandemic, unknown virus, unknown everything. Nobody knows how to handle, how to do. And a lot of it then came down to understanding the science, understanding more about this virus. And then, of course, the treatments, the vaccines,
So I was very fortunate that I had opportunity to serve at a time when there was a huge need, and when I could use my, my strengths in research and science to convene the world's scientists. And it was an incredible time because हम दिन रात meetings सारी दुनिया के वैज्ञानिक से करते थे, and people used to share the data on a day-to-day basis, whatever they were learning. There was a willingness to share because everybody, we felt we were one as a world trying to fight against this virus. और मुझे लगता है कि वहाँ की जो learnings हैं, बहुत learnings हैं, अब हम उसको आगे we can use it for other areas, जो हमारी problems हैं, हमारे challenges हैं देश के, और but also global. मिल के काम करने से बहुत शक्ति मिलती है, and it has to be an equal opportunity, equal responsibility and equal credit. तो जब मुझे वहाँ पे कोई ऐसा नहीं लगा कि I'm a woman और कोई कठिनाई होती है, but certainly at different stages आपको महसूस होता है कि maybe as a woman you are less aggressive, you tend to take a quieter backseat role. I mean, that's also societally how we are trained, so that comes naturally also to us, not to push ourselves forward, but कई बार वो करना पड़ता है. You have to push yourself forward, particularly if it comes to a view that you have, something you believe in, something which has to be said. You should have the courage of conviction to say that, and I think we see all amazing people here on the dais, but I'm sure in the audience as well, that everybody's had that experience and journey. Thank you so much, Soumya ji. I completely agree with you that when you raise this point that women have been playing an incredible role in having a foundation in different fields, particularly the health, and initiating several things, but we don't see women so much in the leadership role. So is that a mindset problem, and how will that mindset change? And I'll confess again that it's not just about the health. In media, hardly I see women at the top roles and in the management roles, maybe only 5%. In fact, Rekha ji had started a capacity building program for media for women, and that's an incredible idea. In fact, Soumya ji was mentioning that there should be a leadership program that the NCW can take it forward, and this is important for the mindset to change and women to take control and charge. तो अब मुझे लगता है कि जेनीवा के रास्ता चेन्नई हम पहुंचे और अब हमको बागपत की ओर जाना चाहिए, और प्रकाशी तोमर जी हमारे बीच हैं. प्रकाशी जी, आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन हजारों और लाखों की तादाद में लोग जो है फैन हैं. शूटर दादी की कहानी कहाँ से शुरू हुई, ये आप हमको बताएं, और कितना मुश्किल था, या आपको लगता है कि आप लकी थी कि उस वक्त आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, या फिर आपने अपने बल पर और अपने जो है इतनी तपस्या की और उसके आगे अनुरूप आपने जो किया वो पाया? मैंने शुरुआत करी एक 5-7 मशीन लगा के एक रेंज बनाई थी गांव में. तो बच्चे कहने लगे हमारे एडमिशन करा दो. मैंने अपनी बेटी पोती का एडमिशन करा, तो मैंने ले जाने लगी. ये कहने लगी हम अकेले नहीं जाओ, हमारे साथ चलेगी. पठानों का मकान था, पठानों के मकान में कभी गई नहीं थी, इनको हमारे साथ चलेगी. इनकी साथ जान लगी. 2 दिन बैठ के देखा, तीसरे दिन मैं ही एक छर्रा भर के मारा, वो ट्रेन में लग गया. रोज कहने लगा दादी तू तो बहुत अच्छा करेगी. 60 साल की उम्र के बाद करा. मगर नहीं, मैं नहीं खेलूंगी. मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बिग फैमिली मेरी बड़ी, तो कोई मैं नहीं करेगा, कोई कुछ कहेगा, मैं क्यों इस पट्टे में पा दूं. कहने लगे नहीं दादी थारे को कोई नहीं बतावे. तो इनकी गैल आई, अच्छे चला के देगी, जग में पानी कर लिया और घेर में प्रैक्टिस कर ली, खेत में कर ली. चलो ठीक है भाई. इब अपना काम खेत का और घेर का था हमारा. तो घरों बहू आ रही थी, खेत का घेर का काम करके एक गाड़ी खड़ी रहती, ट्रक खड़ा रहता घेर में, उसके पीछे जग में पानी लेकर खड़े हो जाते, निपटा का काम.
घर आ गए, नहा के रोटी खा के, भूस का कोठा था उसमें जग में पानी लेकर खड़े हो जाते। रात को करे थे प्रैक्टिस, सुबह को इनकी गेल जाकर चले आए थे। तो लोगों को पता लगा, लोग कहें कि ये बुढ़िया जाएंगे कारगिल में, ये 2 लड़की को ले उठ रहे हैं जवान को, वो भी सुनी। समाज है, गांव है, देखती नहीं, वो भी सब कोच को कहने के भाई नुन्नू कह लगी दुनिया, दादी एक कान में काट एक सुन ले। चलो वो भी काम सोचा। फिर प्रैक्टिस करती रही, अच्छी होती रही। चंडीगढ़ खेलने गए, इनके पापा कहने लगे ना थारी माँ कहाँ गई, नो हमारी माँ आज कीर्तन में गई सांझ दो। हमने तो बहुत कठिनाई पार करी, इतना घूंघट रहता इन लोग। तो सांझ लो आ गई, ठीक है, उन्हें कुछ पता नहीं रहता इतना घेर में, गुरु थोड़े जाते घेर में नहीं आते जी, पर पटदा कहाँ गई। हम गए तमिलनाडु, चलती रही प्रैक्टिस नहीं, तमिलनाडु गए, थारी माँ कहाँ गई, घेर में नहीं आई। देखो 1 हफ्ते के लिए अपने घर गई वे। बच्चों ने सहयोग कराया, लड़कों ने, बहू ने, लड़कों ने सहयोग कराया, उन्होंने खिलाए, उन्होंने ही खिलने नहीं देते। तो चलता रहा काम। फिर एडमिशन इतनी लड़कियों का करवा दिए, देखो दादी दीवार बीच में होगी, लड़कों लड़की के बहुत लड़की के एडमिशन हो गए। उन्हें सबको खिलाया बहुत गणा, फिर गुरु भी उन्हें सिखाया। आज में लड़की इतनी कामयाब होगी, बहुत लड़की की जॉब लग गई, बहुत लड़कों की भी लग गई, बच्चे तैयार करे बहुत गणे। तो आप तो खेल ली, ऐसे ऐसे कठिनाई, बहुत कठिनाई पार करी, इतना घूंघट रहे था। तो फिर खेलते रहे, नहीं बच्चे कामयाब होते रहे। फिर वो फिल्म की आ गई बात। 2000 पर बम्बई बुलाए, 2000 पर घर पाए, वहाँ फिल्म बन गई। जो लोग नु कहे थे, लुगाई कहे थी टीम बना लो, इन्होंने बताई थी टीम बना लो दादी। टीम में तीसरी नहीं मिली, 2 ही थे हम, 2 ही रह गए। जिब बनने लगी फिल्म, बहुत लुगाई आई है, हमारा भी करवा दो कुछ। थारा कहाँ करवाया था जिब तुम बहुत ठल्ली, तुम तो हमने ठाली रह के प्रैक्टिस कर। तो ये काम हमने कठिनाई तो बहुत उठाई, क्योंकि हमारे गुजरत नहीं जानते थे। उन तो लुक लुक कर हमने पता नहीं कैसे कैसे परेशानी उठाई। 2 बच्चे मेरे कामयाब हो गए, और बच्चे बहुत कामयाब हुए। कोई रेलवे में है, इंडिया एयरलाइन में है, एयरफोर्स में है लड़के, नेवी में भी है, और आर्मी में तो बहुत बच्चे हो रहे। तो आज वे बच्चे नु गए हैं, दादी तेरे कारण हमें जॉब मिल गई, नहीं हम तो सब गुरु बच्चे रहते। भाई दादी के मन की पूछ लो, दादी के लोगों ने इतनी मजाक उड़ाई है, बुढ़िया जाएंगे कारगिल में, ये चलावे बंदूक, सबकी सुन सुन के आज इस जगह पे आ गई। मुझे बच्चे भी शीश दे, 2 लड़की मेरी भी कामयाब होगी, बेटी पोती, और मेरी भी थोड़ी पहचान बन गई। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शूटर दादी। और आज अब हमको पता चला कि आपको शूटर दादी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप सिर्फ निशाने में नहीं, बोलने में भी एकदम जो है शूटर। और we might be laughing, we might be, she's humorous and we are enjoying it, but what she has said is significantly important, because in a rural landscape in India, from the time when she actually started, it was massively difficult to come out of those 4 walls and actually create the dynamic energy that she created. And she herself says that she did not agree to those 4 walls, and she continued to strive harder to achieve what she did. And that actually helped the men and the boys in the entire village to get jobs. इससे ज़्यादा incredible क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा जो है उनका contribution society के लिए क्या बड़ा हो सकता है। At this point now, I think I should go to Justice Manohar. And Justice Manohar, when I heard your name, I had to be very sure and thorough in my research and investigation. So not only did I research well, you'll know if I did well,
But I also consulted one of the legal correspondents, and who I had hired long back, and I told her that Justice Manohar is there, and better research and tell me what to ask and what not to ask. I don't want to upset you. So, ma'am, you have had an incredible journey. The more we read about it, more we are surprised and inspired. The first woman of the Bombay High Court, the first Chief Justice of the Bombay High Court, the third in order in the Supreme Court of India, and you've been in the NHRC. You've been part of significant judgments. One that comes to my mind is the Vishaka guidelines that were incorporated that actually led to a kind of a nationwide drive. So my question to you, ma'am, is that firstly, two-part question, that how challenging was it, because we've seen a journey of 40 years or more. How challenging was it, to be at the top in a man's world? It wouldn't have been easy. And secondly, ma'am, now that you look back at your journey and the present day judiciary, do you think that there needs to be an emphasis on women in the higher up judiciary, the higher role in judiciary? Because still I think there's much more that we can strive and do. Is it okay? Yes. Well, before I start, I would like to thank the NCW for inviting me to this function. You have a galaxy of women who have done very unusual things in life and played leadership roles, and I feel very honored to be included in this group. Thank you very much. I was asked how challenging it was to reach the top. If I may start with some small stories. The challenge began before I was born, but that I will tell you a little later. When I was born, and my mother's friend was also expecting, and she gave birth to a boy. And my mother went to see her, and the boy was not a very pretty looking child. But the father of the boy was there, and he told her, Gujarati saying which says, it may be misshapen, but it is a roti of wheat. That means it's a boy, and you can't compare a girl with a boy. So that was the time when my mother decided that her daughter will do better than the boys of any of these people. So the first decision was of my mother. And after me, I have two more sisters. And we have a family tradition that the first one boy is a lawyer and the other boy is a doctor. Now, we were all girls, but my parents decided that it doesn't matter. I was the eldest. I would become a lawyer, and my two sisters are doctors. And in fact, my second sister is one of the top gynecologists of the country today. But then she told me about her mother, my grandmother, who became a widow in the early 30s. And the family was partitioned. The family wealth was partitioned. And she got nothing. Because this was before the 1937 Act, Hindu Women's Right to Property Act. A widow got only a right to maintenance. And my mother was really upset about it. That, what a humiliating thing to happen to a family which was educated, well off, everything going for it. So that was the time when she told us the story, I realized that being a lawyer meant much more than just practicing. We had to work for improving the legal system. We had to work to make laws more just and fair to women and to all who were discriminated against. So that was the second lesson I learned when I was in school. And that has throughout been with me to show that women can do as well as men in any profession, and that we can do better. We can work for social improvement, we can work for better laws, we can work for better systems that govern us, because that after all is what is rule of law. And then when I joined the legal profession, on the very first day, I was not used to discrimination in those days as a student, because
Apart from anything, I was always at the top and there was no problem. But on the first day of my being in the High Court library, the senior most person comes and tells me, "Why have you come here? This is not a place for you." Then, in contrast, another young lawyer who was a poet presented me with a book of his poems. And the first poem of that book was, "A lovely young lady advocate appeared in the small causes gate to appear and plead and state her client's case in a way delicate." Well, I said, that is his concept of a woman lawyer arguing very delicately. And then, when I worked with a senior, he told me, "You know, I can't recommend you in any matter because, you know, if I recommend you, I will be misunderstood." So there you were. So I realized I was entirely on my own and I decided to make the most of whatever little work I got. And then after that, when I had 2 small children and I was not getting any work, I told my husband, "What is the point? Let me now give up this and do something else." So he told me that you must learn time management and don't give up. And if you are feeling worried about children, in the court recess, you come home, look at the children and go back. And I did that for 10 years while my children were small. Then there was another occasion when also I thought I was not getting as much work as I should. And again, I thought of giving up the work. And then he said, "Well, he's a golfer." He said, "How much handicap do you want to give yourself as a woman?" So I thought about it and said, 5 years. If I do as well as somebody who is 5 years my junior, I will be happy. I will continue. And that stood by my side and I've continued. And as a result, I was asked to be a judge of the Bombay High Court. And my idea was to become a good lawyer, and my aspiration originally had been to be the Advocate General of Bombay. But this was an opportunity where I could work on an equal footing with men. And I could decide cases and nobody could question me. So that was the main temptation why I accepted. And after that, I must say that as a judge, I have had no discrimination of any kind. I have been allowed, I have decided the way I did. Quite often, I have also persuaded some of my senior colleagues sitting with me to come around to my point of view also. So I'm quite happy with my work as a lawyer. And ultimately, as you know, I came to the Supreme Court. I was in Bombay for a long time. Then I went to Kerala as a Kerala High Court Chief Justice. And then I came to the Supreme Court. I was the second woman to be in the Supreme Court. And there we had some very interesting. So I think the main lesson one learns is not to get disheartened when you are not successful to start with, but to continue and ignore. Best thing is to ignore all discrimination and just go ahead and give of your best. And that really works in the long run. I think that is all I can say about it. Yeah. I'll come to you again with more questions, ma'am, but let me go to, last but not the least, Khushbu Sundar, who has an illustrious, career as an actress, but chose to be a politician. And in spite of an injury, she has come all the way to Delhi to be a part of this event. I have again a 2-part question for you. One is that, why did you choose to become a politician? You please share your story, because we all know, we've seen you on the screen, we've seen you on debates as well. But why did you choose to become a politician? Because not many, choose this path after so much of success, fan following, etc. Because in some way you might be famous, but this is the hard road. And especially when you come from the South, and the political party that you've chosen is a very difficult journey at that stage. And secondly, a more important question about social media. There's been a lot of trolling of women, particularly, that happens on social media. How does one deal with such kind of a situation? Soumya ji and I were discussing, she spoke about
how the WHO DG once mentioned that we are living in an age of infodemic. There's fake news, etc. happening. But at the same time, there is massive amounts of bullying of women that happens, particularly online. How do we deal with that situation? Good morning and Vanakkam. I would like to start with being from Tamil Nadu. Vanakkam is what we greeted. So Vanakkam to everyone, and it's a great opportunity to be here with such illustrious women. I think their stories are inspiring. I don't know if my story is going to be equally inspiring, but thank you, Rekha ji, for having me here. I think I have to start a little early that why I decided to be in politics. Why I decided to be where I am is a big question. My journey started in Mumbai, being born and bred in Mumbai in a very typical lower middle class Muslim family, and being the only girl after 3 brothers. So when we're talking about discrimination, I think I have seen it right from the time I was born. 3 बेटियों के बाद बेटी हुई है, लेकिन बाप हॉस्पिटल में देखने नहीं हुआ है क्योंकि बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि बेटी हुई है, बेटी जिंदगी में क्या करेगी, मेरे बेटे मुझे कंधा देंगे, तो बेटी तो किस काम की नहीं है. तो 3 दिन बाद ही बाप आया था हॉस्पिटल में देखने के लिए. And I don't have great regards for my father. I'm sorry to say that. I haven't seen him in 38 long years. So I think वहाँ से discrimination शुरू हुआ था, and वहाँ से जो मैंने अपने आप में जो हिम्मत पाई है, मैं तो कहूँगी कि मेरी सारी हिम्मत और मेरी ताकत मेरी माँ है, क्योंकि अगर मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होती. वो कहते हैं all good things come in small packages, and मैं उस बात को बिल्कुल मानती हूँ क्योंकि मेरी माँ जो है वो 4 फुट 10 इंच की है, बिल्कुल पढ़ाई है वो, मतलब उनको सिग्नेचर भी करना नहीं आता, और उनकी सारी जिंदगी सिर्फ हमें लगाई है उन्होंने कि हमारी देखभाल करने में हमारे लिए, एंड कोई कंप्लेन नहीं की उन्होंने जिंदगी भर में. तो आई थिंक my strength comes from her. Now at the age of 16 is when my father left us in Chennai. I was very new to Chennai. I didn't know what I was going to do. I had just started working in South Indian films. Of course, I did a couple of Hindi films, and we had differences with my dad and his abusive nature. So we one day one dad just decided कि नहीं चाहिए. I have a different family. I have one more family. I'm going to go. तो हम सबको छोड़ के गए, and 16 साल की उम्र से being the last in the family, I became the breadwinner of the family and or head of the family. तो I think माँ जो थी मेरी, तो माँ ने सिखाया कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए किसी के सामने सर नहीं झुकाना है, अपने बलबूते पे अपने आप पे भरोसा करके आगे बढ़ना है. गलती हो तो चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, माफी मांगने से कतराना नहीं, क्योंकि माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाते हो, माफी मांगने से आपका बड़प्पन नजर आता है. और लेकिन अगर आप गलत नहीं हो तो सर कटवा लेना, लेकिन झुकना नहीं. तो ये बात शुरू से मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी. उसके बाद of course everybody knows about my journey in films, and yes, discrimination does happen in film industry also. We always have a problem with the paycheck between the heroes and the heroines. We always have a problem with the title credits between the hero and the heroines. And yes, we learn to live with that. We think that it's part of our journey, and we need to grow. So there are times when I do not say compromise. We learn to adjust with the happenings around. My journey into politics was very decided at a spur of a moment. If somebody had asked me, I came into politics in 2010. If somebody had asked me in 2008, prior to that, probably 19, in 90s, I would have always said politics, and me, no way, I'm not fit for politics. Sawal hi nahi hota. It so happened that since Soumya ji has worked with HIV, I had written an article in India Today about HIV, where in Tamil Nadu there's one particular area called Namakkal, which was #1 for HIV. And there were only women who were actually thrown out of the villages because they were HIV positive. There was absolutely no understanding as to the men who were transferring the disease. And the women are not alone to be blamed. It is the men, so the housewives, the women, and it was also the basic base for
truck drivers, because from all over the country, the truck drivers would change their trucks there, and so the journey was there were a lot of sex workers. So I had written an article in India Today saying that premarital sex does happen. You have a lot of children thrown into dustbins. The illegitimacy of children is not out of the wedding, it's out of the wedlock. At the same time, when women are thrown out on the streets, the men are equally responsible, and how we can safeguard ourselves from any kind of sexually transmitted disease or HIV or unwanted pregnancy. And when I wrote this article, there were few political parties who were mushrooming into Tamil Nadu then. They picked it up because they wanted to be attached, they wanted to be seen and heard. And they spoke about it, they took it up saying that I have insulted Tamil morality and the culture of Tamil women. And there was nowhere it was written that. And for 5 years, I had 46 cases filed against me. That is 46 cases in the court. Some of them were like dismissed. But there were 46 cases against me all over Tamil Nadu. And with a 3-year-old kid and a 5-year-old kid, I was running around. I remember in 2005 when these cases started, my older daughter was down with dengue. And I couldn't take her to the hospital because there were 2,000 people sitting outside my house. घर के बाहर पत्थर लेके, सड़े हुए टमाटर लेके, जूतों का माला लेके बैठे थे कि मैं कब घर के बाहर आऊंगी और मुझ पर पत्थर फेंका जाएगा या सड़े हुए अंडे और टमाटर फेंके जाएंगे या मुझ पर जूतों की माला पहनाई जाएगी. एंड जब एक 5 साल की बेटी जब डेंगू में है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, उसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, और मैं उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पाई. उसको घर को हमने बिल्कुल एक हॉस्पिटल बना दिया था, उसका सारा इलाज घर पे हो रहा था. तो एक माँ होने के नाते मुझ में यह था कि ये लड़ाई मेरी है, मुझे लड़ना है, क्योंकि मैंने कोई बात गलत नहीं की है, सच्चाई के साथ रहना है. And that is when I had decided that I want to be part of politics, because these were the mushrooming political parties in Tamil Nadu then. If somebody like me who had everything at the back of my hand, you name it and I could get it. If I could go through it where I could not take my child to a hospital, I wanted to think that what a normal woman would go through if she is faced with these kind of problems. And we were seeing that हर वक्त कोई ना कोई औरत, कोई ना कोई महिला हमारे देश भर में कहीं ना कहीं से कोई तकलीफ उठाई जा रही है. एंड ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उनका यही था कि ये जो मशरूमिंग पार्टीज थी उनका था कि महिला है, औरत है, माँ है, फेमस है, अपना इमेज बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए झुक जाएगी और माफी मांग लेगी. लेकिन they were not sure that they were, who they were dealing with. They were knocking at the wrong door. एक पठान के साथ लड़ रहे थे, तो भूल गए थे कि एक औरत जो है, एक माँ जो है, उसकी सबसे ज्यादा शक्ति उस वक्त बाहर आती है जब उसके बच्चों पर कुछ आ जाती है. That's when the wounded tigress comes out of her den if you touch her cups, and that is what I was. But then I spoke to my husband saying that I want to get into politics, and my biggest support system was my husband. He never came in front. कभी भी सामने नहीं आया. उन्होंने कहा ये लड़ाई तुम्हारी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा. तुमको आगे चलना है, तुमको लड़ना है. तुम गिरोगी तो तुम्हें संभालने के लिए मैं हूँ, लेकिन ये लड़ाई तुम्हारी है. What you said is right. What you have been fighting for is your fight, and I want you to see as emerge as a winner. So डरना नहीं, आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ. And ये जो मेरी 5 साल की लड़ाई थी 2010 से 2015, जब 2005 से 2010. सो 2005 में ये केसेस शुरू हुए थे और 2010 जब सुप्रीम कोर्ट में 22 केसेस में मैं जीती हूँ, एंड जब ये लड़ाई से मैं बाहर आई तो मैंने सोचा दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज़ माय हस्बैंड सेड कि जब तुमको पॉलिटिक्स में आना ही है, अगर तुम अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करोगे तो यही कहा जाएगा कि you had a political support, you had the support of your leader, you had the support of the political party, and that is why you were able to win the cases. Don't do that. You win the cases and then you join politics. And 2010 in April, I won these 22 cases in the Supreme Court. And April 2010, I joined political party DMK under the guardianship of Dr. Kalaignar. I joined the DMK.
After that, yes, I 6 years into DMK, there were a lot of problems there, and I think we all women face that. You're a woman, so you can't be in the front. You have a family issue, you can't be a good speaker. You're a woman, you're beautiful, you're a good speaker, you're courageous, you are intelligent, and all these things are absolutely no-no when you're the party is run by a couple of people who think that we, the men should be in the forefront and not the women. And I faced those kind of problems in my first political party. I must hand it over to Dr. Kalingar, who's no more with us, but then Dr. Kalingar, I think he was one of the best leaders I could work with because I learned he was one man who was so confident and जो कहते हैं कि किसी बिना डर के किसी झिझक के तुम में टैलेंट है, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे चलो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, उस तरह का जो एक बर्ताव उन्होंने मुझे दिखाया और मुझे सपोर्ट किया. उनके बाद ऑफ कोर्स काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई मुझे. And the lesser I say about the other political party I was in, because there's not a political platform, I wouldn't want to speak about politics much. But I think I'm in a very, very happy space now. I think late आए लेकिन दुरुस्त आए, तो जहाँ भी हूँ बिल्कुल सही हूँ. And we have seen how we all have been fighting for women rights. We all have been fighting that women need to be empowered. And मेरी जो journey है, मेरी जो लड़ाई है, वो मेरी अकेली की journey है, मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है. इनफैक्ट रेखा जी जानती हैं कि अभी बीच में मैं डीएमके से मेरे खिलाफ एक बहुत ही घिनौनी बात एक प्लेटफॉर्म में डीएमके की किसी इंसान ने रखी थी, तो आई हैड टू ब्रिंग इट अप टू एनसीडब्ल्यू एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक रेखा जी एंड द एंटायर टीम ऑफ एनसीडब्ल्यू कि दे हैड कॉल्ड दैट पर्सन हियर एंड उनसे बातचीत की और उनसे रिटन अपॉलॉजी मुझसे लिखवाई है. एफआईआर भी उनके अगेंस्ट दर्ज हुआ है तमिलनाडु में, सो वी आर टेकिंग इट फॉरवर्ड. बट आई थिंक पीपल लाइक Rekha ji or NCW and all the other illustrious women here, because not just because we are on the platform doesn't mean that we have a story to tell. I think every woman here has a story to tell, and every woman is a fighter here. Margaret Thatcher said, put a woman is like a tea bag, put her in a hot cup of water and you know what her strength is. And I think all of us are that until unless we are not pushed against a wall, we don't bring out the best in us. And I think we all need to be strong. We all need to be very clear-headed. We all need to be confident and determined in what we want to do. क्योंकि जब तक अगर हम conviction के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, एक साहस के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम जो आज कहते हैं सशक्त नारी सशक्त भारत, तो भारत जो हम कहते हैं हमारी माँ है, हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. So I think it's important that we all women need to come together and tell our stories. This is the time to tell a story. बहुत हो गया यार, दीवारों के पीछे, दरवाजों के पीछे, अम्मा जी की तरह घूंघट के पीछे, बहुत हो गया. आगे बढ़ना है एंड लोगों को दिखाना है कि हम जो हैं कुछ भी हो जाए, चाहे वो बरसात हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए, हम तो आगे बढ़ेंगे. हमें रुकने के लिए कोई नहीं है और हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी. और बस यही है आदित्य की जर्नी कंटिन्यू है. माय जर्नी इन पॉलिटिक्स नीड्स टू And the journey should continue. Thank you so much, Khushbu, for such incredible remarks and a courageous journey that you spoke about. I'll come back to you with more. But हम सशक्त भारत की बात कर रहे हैं, सशक्त नारी की बात कर रहे हैं. And before I come to all the panelists again, we have some incredible women amongst us. और उन्हीं में से एक के पास मैं अभी जाना चाहूँगा. मैं देवलीना को बोलूँगा कि रेणु प्रधान जी हमारे बीच हैं, जो पिकल क्वीन ऑफ कालिम्पोंग के नाम से जानी जाती हैं. 1987 में वो जो है मिस कालिम्पोंग भी बनी और एक बहुत 14 साल की उम्र में बहुत ट्रेजेडी हुई, लेकिन खुद पे उन्होंने विश्वास रखा और पूरे परिवार को संभाला और परिवार ही नहीं एंटरप्रेन्योर बनी और बहुत आगे चलती जा रही हैं. अपनी कहानी आप संक्षेप में हमें बताएं और बताएं कि कैसी ये जर्नी रही है आपके लिए. हेलो, रेणु प्रधान. रेणु प्रधान, मैं कालीमुंग से आया हूँ और रेखा मैम, मैं ज्योति मैम से बोलिए टाउन हॉल में एक बार बोले थे, वैसे आके यहाँ पर आई हूँ. और यहाँ मैं बचपन छोटी था ना, तब 6-8 को फ्लड से हम दार्जिलिंग बिजनबारी में था. उसके बाद में बड़ी सिस्टर यहाँ कालिम्पोंग में शादी हुआ था ना, तब माँ को बोले चलो माँ को सिस्टर के पास जाना, उधर बैठने. इधर हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ उधर जाने के लिए बोला है.
तब हम कालिम्पोंग आया। कालिम्पोंग आने से मेरा जीजाजी पैसा दे रहा था, 5 रुपये 5 पैसा 10 पैसा, वो जमा कर करके कंतर में जमा करके 1 महीना इकट्ठा हो गया था। उसके बाद में तो हम लोग बाजार में दुकान लगाए, वो लगाया, कितली में चाय बिक्री किया, प्याजी बिक्री किया। तो मेरे मन में हो गया और हम ठीक है सब्जी बिक्री करेंगे। सब्जी बिक्री करने के बाद में तो मन में ऐसे हुआ, तो वो लोग बड़े बड़े सिलूर से सामान लेकर बिक्री कर रहा था, तो मैं भी जाऊंगी। तो उसके बाद वो उसके थोड़े से सामान मांगा था, वो हमको सामान नहीं दिया। 5 किलो टमाटर थे, वो भी उठा कर ले गया था। तब मन में हमको रात नींद भी नहीं आया, कंतूर फुटाया। कंतूर फुटाने के बाद में तब सिलगुड़ी गया। बोला वो टाटा में चढ़ा था ना, वो 5 रुपये 8 भाड़ा था, बस में टीना का बस था। उसने अब बोला था और चित्रे में गाड़ी रोक दिया था। तो बोला कहाँ जाना है, हम सिलगुड़ी जाएंगे। सिलगुड़ी गया तो पैताला चल के गया। मेरा जीजा जी देखा था ना वहाँ पर, और पैताला चल के वहाँ पर गया कर और 1 टमाटर खरीद के आए। बड़े टोकरी में था, 20 रुपये 25 रुपये उसमें क्या फूलगोभी खरीद किया था। वो लेकर रिक्शा में 20 रुपये 20 पैसा भाड़ा था। तो पांडी में आकर चढ़ के वो हम लोग बिक्री कर दिया। जल्दी आया था मेन रोड में, बिक्री करने के बाद में और मेरा तो पैसा ज़्यादा उठ गया, नाफा हुआ। वो पैसे लेकर फिर सामान लेकर हरिद्वार में गया। हरिद्वार में हम बिक्री किया था ना, बिक्री करने के बाद में वो दूसरा लोग दीदी लोग सभी लोग बोला था तो हमारे लड़की को क्यों सिलगुड़ी जाने दिया, गुंडा लोग उठा के ले जाएगा बोला। तो माँ को हम पैसे दे रहा था बिक्री करके, माँ पैसे नहीं दिया हमको। तब धीरे धीरे जमा कर करके थोड़ा थोड़ा करके अभी मेरा बिजनेस शुरू हो गया, बड़ा हो गया, होलसेल हो गया। तब वो दोस्त लोग सभी लोग बोलता था ना उस टाइम में, और तुमको गाड़ी में माल नहीं उठाएगा। तो बोला है तो ठीक है। तो रात हुआ 9 बजे हुआ था रात में, तो अकेली था। तो पानी के में आया था 612 था एक टाटा का, एक टाटा में 612 लेकर हम उसमें सब में माल इकट्ठा करके, उस टाइम में मेरा पैसा ही नहीं था। पैसा नहीं था ना, तब क्या करती थी मैं, और अक्सर में माल देते थे लास्ट में, एकदम लास्ट में अक्सर को माल लेकर वो बिक्री करा। वो जो दाम में वो लोग भी खरीद के रहता ना, वही दाम में हम वहाँ पर कालीम्पोंग आकर दे रहा था। तो मेरा सेल ज़्यादा हो रहा था, वो लोग जेलेस हो गया था पूरा। रेनू इतना चट्टू है, चालाक है, बोलते थे हमको। तो जाइए तो पैसा कमाने है, वो लोग हम लोग को इतना आगे बढ़ने नहीं देता है, तो करने तो चाहिए ना, इसीलिए बोला है। और तो धीरे धीरे सेल बोला। तो मेरे माँ बोला और सब्जी बच जाता, कभी बच जाता ना, तो माँ बोले तो इसमें हल्दी नमक डाल के सुखा लो, सुखा कर तुम पिकल बनाओ। तो माँ बोले बना दिया। धीरे धीरे वो डालडा के बर्तन में डाल के वो पावा पार के करके बिक्री कर दिया था, धीरे धीरे कर। तब मोटरसाइकिल में कैंटीन खोला था मोमो का। कालिम्पोंग में फर्स्ट में वेजिटेरियन मोमो में ही खुद ही बना था। 2 रुपये में 10 मोमो दे रहा था, 10 रुपये मोमो देकर अचार देकर बना। तो धीरे धीरे करके मैं रेनू जी आज कितना बड़ा बिजनेस है आपका, ये बताएं, कितना कमा लेती है? अभी तो बहुत कमाती हूँ, और 300 ग्राम मिर्चा लिया था, अभी तो बहुत कमाती हूँ। तो अभी मकान हुआ है मेरे पास, सब कुछ है, अभी कुछ नहीं, सब कुछ है ना। तब 300 ग्राम मिर्चा लिया था, 300 ग्राम मिर्चा लिया। अच्छा, आप कालिम्पोंग क्वीन कैसे बनी, ब्यूटी क्वीन कैसे बनी, ये बताएं। तो मेंटर पे दुकान कर रहा था ना, एक दादा आया बोला वो टिकट दिया, 150 रुपये का टिकट काटने लगा था। तो 150 रुपये टिकट के और बहन देखना कौन होगा मिस कालिम्पोंग, हमको बोल देना बोला। तो ठीक है बोल। तब छोटे लड़की लोग को 5 टू घुस दिया था। तो एकदम कुना में बैठ के हमको गाना वो कर रहा था ना, डांस हो रहा था, थोड़ा थोड़ा देखते। तब हमको ऊपर बुलाया, मिस कालिम्पोंग बना दिया। उसको हमको कहीं मालूम नहीं था। वो मुकुट पहना दिया, हाथ पहना दिया, है ना, ऐसे हुआ था। Thank you so much, Renu Pradhan ji. बहुत ही inspiring story है आपकी. I think Devrina, we have some acid attack survivors also amongst us. आप हमारे समक्ष अगर कुछ कहना चाहें अपनी स्टोरी के बारे में, अपने जर्नी के बारे में. थैंक यू इनवाइटिंग मी एंड माय कलीग्स. मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं NCW ने मुझे इनवाइट किया है, और थोड़े टाइम पहले
एक चैप्टर था एसिड अटैक के ऊपर जो कि डिसेबिलिटी के उसमें वो एड ऑन हुआ था, तो मैंने और मेरे एक सीनियर ने उसमें एडिटिंग किया था, तो मुझे अच्छा लग रहा था सुन के कि मैं उनके इवेंट में जा रही हूँ। तो वैसा ही है कि 2012 में मेरे ऊपर अटैक हुआ था और मेरे कज़न ब्रदर ने मेरे ऊपर अटैक करवाया था किसी से 1,25,000 रुपीज़ दे के। और सभी की ऐसी ही जर्नी है। उसके बाद सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है, रिलेटिव साथ छोड़ देते हैं, कुछ फैमिली साथ देती है, कुछ नहीं देती है। टचवुड मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, सपोर्टिव थी कि मेरे पेरेंट्स ने और मेरे भाई बहन ने मुझे साथ दिया और मुझे कंटिन्यू 2 मंथ्स तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा और उसके बीच मेरा लेफ्ट आई चला गया और मैं 100% इससे नहीं देख पाती हूँ, आर्टिफिशियल आई है। और मुझे लगता है कि कुछ जाता है तो कुछ मिलता भी है, कुछ खराब होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। तो मैं 2 साल तक तो घर में ही थी, एक कमरे में बंद थी, 2 मंथ्स तक कंटिन्यू हॉस्पिटल में एडमिट रही। उसके बाद लगातार ऑपरेशन होते रहे और एक टाइम आया कि हमारे पास पैसा नहीं था ऑपरेशन कराने के लिए। तो मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली, तो हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हमको ट्रीटमेंट कराना है पर पैसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी हॉस्पिटल तुमको पसंद हो उसमें जाओ और एक एस्टीमेट लेके आओ। तो मैं जहाँ तक भी मेरी फैमिली और हम लोग अप्रोच कर पाए तो अपोलो हॉस्पिटल गए हम दिल्ली में। उन्होंने 20 लाख रुपए का एस्टीमेट दिया कि 20 लाख रुपए और लग जाएंगे। तो मेरे को वो अमाउंट पास किया गया और आज मैं ट्रीटमेंट दिल्ली में करा रही हूँ और अभी तक 16 ऑपरेशन करा लिए हैं। तो लगातार वो चलता रहता है। बट मैं छा फाउंडेशन का थैंक्स करना चाहती हूँ, शीरोज़ हैंगआउट का, जो उन्होंने 2014 में मैंने उसको ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। मैं तो नहीं जानती थी, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, सोशल मीडिया क्या होता है मैं कुछ भी नहीं जानती थी। बट जब मैंने वो ज्वाइन किया तो मेरा पहला पड़ाव था सोसाइटी के बीच में दोबारा से इस फेस के साथ। जब मैंने पहली बार मिरर में देखा था फेस तो लगता था कि अब नहीं रहना है, अब मर जाना है, या मतलब इस फेस को लेके मैं कैसे जाऊंगी। बट छाव फाउंडेशन जब मैंने ज्वाइन किया 2014 में तो लगा कि नहीं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मेरे जैसे और भी मेरे दोस्त हैं जो सामने आए हैं और अपनी लाइफ में फाइट करें, मैं क्यों नहीं कर सकती। किसी किसी की तो दोनों आंखें नहीं है, वो किसी को साथ में लेके चलते, पर मैं खुद से सब कुछ कर सकती हूँ। तो वहीं से एक जर्नी स्टार्ट हुई और सब लोगों से मिलते थे तो लगता था कि कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। मैंने 10th क्लास तक ही स्टडी किया है, स्टडी कंप्लीट नहीं किया, बट मैं स्पोर्ट्स में अच्छी रही। तो मैंने वॉलीबॉल खेला था स्टेट लेवल पे और मैं लिफ्टिंग करती थी। जब मेरा लेफ्ट आ गया तो मैंने दोबारा ट्राई किया पर वैसा नहीं हो पाया। तो आज मैं कराटे सीखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ बेहतर कर पाऊँ। और जो मुझे मौका मिला मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने लास्ट अभी छपाक मूवी आई थी जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के ऊपर बनी थी, उसमें मैंने काम किया। अकीरा मूवी में काम किया, या मैंने कहीं पे मुझे रैम्प वॉक करने का मौका मिला। ऐसे मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर्स के लिए एज अ शो स्टॉपर रैम्प वॉक किया। तो ऐसे ही जर्नी चल रही है। मुझे लगता है कि मैं कोविड के बाद मतलब कोई फ्यूचर प्लानिंग इतना नहीं रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोविड में ऐसा हुआ कि यंगस्टर और कितने सारे लोगों की डेथ हो गई और उनके प्लान रखे के रखे रह गए। मुझे लगता है कि जो करना है मुझे आज करना है। तो मैं फाउंडेशन की बोर्ड मेंबर हूँ और दिल्ली में जितने भी मेडिकल का कुछ भी काम होता है, किसी का ऑपरेशन कराना है, कुछ भी कराना, तो मैं लीड करती हूँ उसको। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी को सपोर्ट कर पा रही हूँ। मैं आज में जिंदा हूँ, जो करना है मुझे आज ही करना है, अभी ख़त्म करना है। तो यही सब चल रहा है। Thank you so much. Thank you. Such an inspiring journey, and I would now head back to the panel discussion. And Justice Manohar, if I can come back to you. Personally, I want to ask you a question. You know, when I was just 16, 17 years old, my claim to fame before becoming a media journalist was an activist. And there was a case that you might have also come across. It was a case which was fought for several years in several courts, Priyadarshini Mattu, a rape and murder case. And for 10 years, the convict was out. The lower judiciary had said that though I know that he's the man who has committed the crime, but there isn't enough evidence, so I set him free. For 10 years, the same gentleman was practicing law. He married, he had a daughter. And after 10 years, in 2006, we campaigned and we forced literally the CBI and the judiciary to take up the case.
there was a suo motu cognizance, and finally the same man was given death sentence after 10 long years. Finally, the Supreme Court commuted it to life sentence. He's still inside. But I, ma'am, come across several such cases against women where convicts, and these are rarest of rare cases, at least in the public opinion, where the convicts walk free. They are inside the prison for several years, but they actually walk free. What kind of a precedent are we setting for the society? There was a Justice Verma committee that was set up. There are, of course, the Vishaka guidelines that came in. And I'm not saying that there has not been a shift or a mindset change. There has been. There have been provocative steps that have been taken that were needed. But why do we fail at perhaps either at the judiciary level or more so at the investigation level, where either it takes years, ma'am, to convict a rapist or a murderer or a person who has committed crime against women, and once he is convicted, there isn't a kind of a conviction which sets a precedent. I entirely agree with you. There are many things which require to be changed. First of all, we don't have a separate investigation wing for crimes. And I think that is a basic drawback, because ultimately the judges have to decide on the basis of evidence which is placed before the judge. And as you know, in criminal cases, you must give the benefit of doubt to the accused. Now, you have to see to what extent you can modify this law, or whether it will be safe to do so that some innocent person is not convicted. But the main thing is that if you have proper investigation, such situations should not arise. And secondly, the investigation must be speedy. If you take 10 years to investigate, most of the evidence will disappear by then. So you can't have that kind of an investigation. So that is the first weak limb of our criminal justice system. And the second part is that you must give continuous training to the judiciary. We have judicial training institutes, but there must be a special focus on the lower judiciary, what we call the lower judiciary, on that proper training and their ability to appreciate what is happening before the court. So I think we require updating of the entire system, plus we require many changes. And the worst thing is the delays. I think that is really deadly, and it goes against any fair decision being taken. So I think we do need to change many things in our system. Briefly, if I can ask you again, ma'am, which I asked earlier, that now we see women taking a higher role. Yes. But do you still feel that in the higher levels of judiciary, there still needs to be more emphasis on women to be included in the Supreme Court, in the high courts across the country? And what steps can be taken in this regard? Well, I would put it a little differently. I certainly would be very happy if there are more women in the judiciary at all levels. But I don't believe in any kind of a quota or reservation. I think that is not being fair to the women also. I think women can do much better without reservation or quotas if there is no prejudice also. So I think we have to work to see that women are treated equally. There's no prejudice against them when they make an argument, and that they are allowed to function properly as lawyers. And women also have to give their full attention to what they are doing and show to the court that they are really able and capable of doing much better if given an opportunity. But I do agree that looking to the number of women who are now practicing and looking to the number of women who are now coming into the legal system in various ways, I think there should have been much better representation to women in the judiciary. But I think it will come. The sheer numbers quite often eliminate prejudice. So I'm hopeful that soon we will have many more women. Well, we all remain hopeful. Thank you so much, ma'am. Khushbu, if I can come back to you. We are talking right now at a time when the budget is being presented inside the parliament, and who better than a woman herself, Nirmala Sitharaman, is presenting that. Yesterday, the NCW inaugurated this, and we had the Honorable President of India, Draupadi Murmu. But as a politician now,
do you feel that it's time for a women's reservation bill to be introduced inside the parliament? One, because it's been pending for a very long time. And secondly, even if not women's reservation bill, for the political parties across the country, do you think emphasis has been laid on giving tickets or supporting women leaders across the party lines? Or do you feel still women, particularly from the marginalized communities, are still neglected? To be very honest, I think they're still neglected. Though the leadership would want more women into power, come into politics, I think the basic problem what arises is what I have seen in 13 years of my political career. Women do want to be in politics. What the men do is, बीवी के नाम पे सीट ले लेते हैं, बीवी को बाजू में बिठाते हैं और बोलते हैं कि मैं आगे से काम करूंगा, तेरे नाम पे सीट आई है, तू पीछे बैठ, डिसाइड मैं करूंगा. So I think that system needs to change, and until and unless we do not change that at the ground level, we will not be able to come up and say we are talking about women reservation or we are talking about women more in politics. I think the basic mindset of the patriarchy attitude of men at the lower level still exists, and that needs to change. And I mean, I have seen that I'm going for a campaign and पति आ रहा है साथ में कैंपेनिंग के लिए. अरे आप नहीं बीवी कैंडिडेट है, वो घर पे, आप क्यों आ रहे भैया? कैंडिडेट को आना चाहिए. नहीं वो उसके नाम पर है, लेकिन बाकी मैं संभालूंगा. So I have to put my foot down and I said no. I want the candidate. The people need to see the candidate and not you, because people are going to vote for the candidate. तो तुम्हारे लिए वोट नहीं दे रहे. पोस्टर पे जिसका नाम है, जिसका नाम है, उसके नाम पर वोट देंगे, उस पे भरोसा करके वोट देंगे, ना कि मैं इसको वोट दे दूंगा तो उसका वो तो अपने घर में बच्चे संभालेगी, किचन संभालेगी, रसोई संभालेगी और मैं पति काम करेगा. I said I'm not into this. So I have to put my foot down, and this is the attitude which needs to change. I want more women to come into power. I want more women to see. We have seen, especially now, in with Draupadi Murmu ji as the president, or Nirmala ji, or we had Sushma Swaraj, or we had Smriti Irani. You have so many women. It's not about politics alone. But I think politics is a huge task. It's a Herculean task. And कहते हैं ना कि भैंस की स्किन होनी चाहिए. आपकी खाद जो है वो भैंस की होनी चाहिए, that nothing penetrates. मैं कहती हूँ not even a buffalo skin. I think you need to have a real hippopotamus skin that nothing penetrates. And I'm not saying it's dirty, but people can make it dirty. We have to make sure that we set it right and we make it clean. But there are plenty of men around who make sure that politics can be dirty, and I have seen it. I have personally seen it. So I think the basic attitude when we talk about, I love the way, ma'am said ki we don't have to be prejudiced and say that the reservation, we are talking today, the government of India is talking about 33% of reservation bill, which is going to come into effect. But I think beyond that, we need to work beyond that. Why are we restricting ourselves to only 33%? Why are we restricting ourselves to only a certain amount of reservation bill and say that this is all a woman is capable of? No, woman is way capable of more than 33%, and we need to bring that up equally or probably more. I would say 60-40, 60 women and 10% men. एक औरत अगर अपना पूरा घर चला सकती है अकेले, तो I think वो औरत कहीं भी कोई भी काम मर्दों से ज़्यादा नहीं कर सकती. तो I am कि ये 33% हम लड़ रहे हैं. लेकिन ये अगर एक शुरुआत भी है तो we have to go beyond 33%, and everywhere women have to fight it out and really say that I don't need to be bracketed into a bill. I don't need to be bracketed into a reservation bill or anything, any kind of a percentage, and say this is all my capacity is, this is all I'm capable of. I am way beyond that, and I'm going to prove myself. But then it starts at home, so we need to learn from them. Absolutely. Let's hope that much more will be achieved by women, and certainly on their own might and strength. प्रकाशी जी, अगर मैं फिर से आपके पास आऊँ, आपकी शूटर दादा की कहानी तो हमने सुनी, लेकिन आप जो प्रेरणा देती हैं आजकल की बच्चियों को और खासकर रूरल एरियाज में, गांवों में, आप बच्चियों को क्या सलाह देंगी? या जब आप बात करती हैं बच्चियों से बागपत में या फिर आप देश भर में कहीं जाती हैं,
क्योंकि मैंने और हम सब ने देखा है कि गांवों में अब तो चलो बहुत हद तक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन अभी भी जो सोच है वो कई हद तक एक जगह थम जाती है। तो क्या आपको लगता है कि आप जो प्रेरणा स्रोत बनी हैं वो बच्चियों को और मदद देती हैं, आप इंस्पिरेशन देती हैं, और उनको आप क्या सलाह देंगी? देखो, आजकल मेरा तो यही विचार है, यही मैं करती हूँ, लड़की पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, लड़की को बहुत सिखाती भी हूँ, प्रेरणा भी देती हूँ। और आजकल महिला किसी से कम तो है नहीं, महिला बहुत आगे हैं। महिला जहाज भी चलाती हैं, गाड़ी भी चलाती हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। और महिला कसर के है जी, हमारी राष्ट्रपति भी महिला है। और मैं यही सलाह देती हूँ लड़की को भी कि अपने में हिम्मत रखो, कहीं डरना नहीं है, अपने में हिम्मत रखो। धाकड़ बनोगी तो कामयाब बनोगी, कमजोर बनाओगी अपने को तो घर बैठोगी। तो मैं यही मेरा तो यही विचार है, लड़कियों को हिम्मत बढ़ाने का, उन्हें सहयोग देने का, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम है मेरा तो ये। जय हिंद, जय भारत। उर्मिला जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी हमने जर्नी तो देखी और आपसे सुना कि कितनी कठिनाइयाँ आपको मिली, ट्रेजेडीज हुई, लेकिन उसके बावजूद आपने एक पहल की। लेकिन आपको मास्टर शेफ में भी हमने देखा, उसकी कहानी आप हमें बताएं मास्टर शेफ की। और दूसरा, अब आपका बिजनेस कितना एक्सपैंड कर रहा है, कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा है? मास्टर शेफ में मुझे बुलाया गया, मैं तो खुद लेके नहीं गई थी। मुझे तो लगा मैं सिलेक्ट होंगी या नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो खाली एक पूरन पूरी लेके एक छोटी सी बैग में लेके गई। सब लोग को देखा, इतने बैग भर के आए थे, क्या क्या बनाते थे, क्या क्या नहीं। मैंने बोला हम तो इसमें सिलेक्ट नहीं होने वाले हैं, इतनी सी चीज़ में क्या सिलेक्ट होएंगे। पर हम लेके गए, वहाँ हमने पूरनपूरी दिखा दी। फिर हम लोग तो घर पे चले आए, हमें कुछ किसी ने बताया नहीं। हमें फ़ोन आया शाम को, अरे तुम घर क्यों भाग गए, अब तो सिलेक्ट हो गई है। तो हमने बताया हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है कि हम सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं। तो फिर मास्टर शेफ में मुझे सिलेक्ट किया गया, 2 बार मुझे वहाँ बुलाया गया। एक बार तो मेरे से पात्रा बनाया, किसी ने उधर पात्रे के पान पड़े थे जो कौलवी के पान बोलते हैं, तो किसी ने उसको हाथ ही नहीं लगाया। तो मैंने वो पात्रा उठा लिया और मैंने पात्रा बनाया, तो सबको बहुत पसंद आया। बाद में जब हमारा ऑडिशन शुरू हुआ तो वापस मुझे बड़ा पात्रा बनाओ। वो लोग को ऐसा लगा कि पात्रा बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पात्रा बनाना मुश्किल है। पात्रा से झटपट हो जाता है। मुझे बोला आप कलाक में 1 घंटे में आप पूरा कर सकोगी। मैं बोली क्या, मैं पौने घंटे में आपको करके दिखा। फिर मैंने पात्रा बनाया, मैं शेफ के सामने लेके गई। तीनों शेफ को मेरा पात्रे बहुत ही अच्छे लगे और मुझे आगे बढ़ाया वो लोग ने। मैं नॉनवेज तो बनाती भी नहीं हूँ, नॉनवेज खाती भी नहीं हूँ। अब क्या चल रहा है कि ज़्यादा नॉनवेज चल रहा है, और मेरी डिश भी जहाँ मुझे अंडा फोड़ना भी नहीं आता है, तो सफेद को कैसे बाहर निकालूं, येलो को कैसे बाहर निकालूं, ये सफेद को कैसे बाहर निकालना, येलो को कैसे बाहर निकालना। फिर मैं कैसे भी करके मैंने मेरा डिश जितना हुआ उतना पूरा किया। बाद में मुझे बोला कि आपको अभी निकल जाना है। मैं बोला ठीक, कोई बात नहीं है, मैं तो निकल जाऊँ, लेकिन मेरे आगे सब है, लेडी लोग हैं, मेरे जेंट्स लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो आगे बढ़े, उसमें ही मैं खुश हूँ। ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे शेफ ने वापस बुलाया, तब हमारा गुजरात में आनंद में शूटिंग हो रहा था। तो हमें बोला कि आपको हमारे साथ आनंद आना है और आनंद में आके आपको हमारे साथ शाम में वापस खाना बनाना है। और मुझे ऐसा सबसे छुपा छुपा के सबके सामने सरप्राइज किया कि आज माँ आ रही है। और मैं फेमस हूँ, मास्टर शेफ का कोई भी
लोग मुझे माँ जान करके पहचानते हैं। उर्मिला जी नाम से कोई नहीं पहचानता है। सब लोग बोलते हैं आप मास्टर शेफ के बा है ना, आप मास्टर शेफ के बा है ना। मैं बोलती हूँ हाँ। तो ऐसा मैं वापस भी गई और मुझे बहुत सम्मान मिला। तीनों जज बहुत अच्छे हैं, उसके लिए भी मैं बोलती हूँ, उसको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। कभी भी किसी को भी हेल्प लगी तो वो कभी ना नहीं बोलते कि नहीं नहीं आप करो, आपको मैंने बोल दिया ये बनाने का तो बनाओ। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा मास्टर शेफ में जाके। और मैं यूट्यूबर भी हूँ, गुज्जू बहन के नाश्ते के नाम से मैंने तो मुझे बहुत ही पसंद आया। और मैं सबको बोलती हूँ करो, कुछ भी करो। खाना बनाना मुश्किल नहीं है। आप लोग सोचते हैं ये कैसे बनाओ, एक बार लगो, दिल लगा के करो, सब आप सक्सेस हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगता है बाकी हाथ का खाना तो बिल्कुल हमें खाना पड़ेगा। गुजराती बहन का नाश्ता मुझे लगता है सब लोग ऑर्डर करेंगे और ज़्यादा आपको तरक्की मिले और ज़्यादा जो है लोगों को पता चले। धन्यवाद। If I can now come to Soumya ji again. I have a similar question to what I asked earlier, and this time it's about the government sector here. For women researchers, and there are plenty of women researchers, how difficult is it to work in the government sector in India? And is it any different in the private sector? Or could you, with your experience, introduce any changes or suggest any changes in the mindset, in the approach? Thank you. I think the problems are similar in the government, private, and non-governmental sectors. For specifically for researchers, and I would say the problems are same in other parts of the world also. It's not unique to India. That has been my experience that globally, women, and here one has to also acknowledge the fact that being a woman versus being a man is only one aspect of your life, but it also depends on other things. Which country do you come from, what socio-economic background do you come from, religion, caste, many things affect your possibilities for doing things. So one should consider, apart from gender, we also have to look at these other aspects in society which need to change in order to empower boys and girls to have an equal chance. So when I speak to I have a lot of colleagues and friends from around the world who are researchers, we find a lot of commonalities rather than differences. So I think it's a global problem, not and if you look at global health institutions, for example, there's an analysis that's put out every year which is called the Gender 50-50 report, and they analyze the leadership in global health organizations, and again you find about 80 to 90% are men, and mostly they are men from high income countries and from Western Europe and North America. So now I think we can take strength also from forming these global partnerships of women from Africa, women from Latin America, because then you see you're trying to change things everywhere. So what are the challenges that a young scientist or a researcher faces? I think I mentioned some of them earlier. One really big issue is the career path, which has to be more flexible to account for women's other responsibilities, because we cannot expect that women will not get married, not have children. Very often you have older people in the house. Again, it's become women's responsibility to take care of aged parents. So you're always with children or with aged parents, so your whole life could go in that. So I think there has to be, now with COVID, we've seen so much flexibility in the way that we can do things. One doesn't always have to be physically present in one place to get the work done. In fact, many companies today have gone completely to online mode because they're actually finding it more efficient. And I know that most women I spoke to found it very convenient to do their work from home because they could also do childcare. The children were at home, schools were closed. Of course, it's not possible for all professions. For many professions, you have to be physically present to do the job, especially when we talk about our essential workers and frontline workers. In fact, I would like to pay tribute to the frontline health workers, majority of them women, nurses.
Ashas, Anganwadi workers, doctors, they were the ones who never stopped even for a day during the pandemic. And it is thanks to them, that so many lives were saved, and that the immunization program, the incredible feat of vaccinating, giving 2 billion doses in India alone was achieved. Majority of them were women, and we have seen videos and photos of them, crossing rivers, walking by foot, growing on snow, most difficult conditions. So I think we must keep reminding ourselves and others that they do the hard work. They do the hard work, the day-to-day work, and they must be rewarded also adequately. So I think Khushbu ji mentioned about the pay disparities between men and women in the film industry. This happens everywhere, and we have to be very conscious, and also especially our frontline workers, those who do the hard work, they must be compensated fairly. So I think flexibility is one. So government agencies as well as private sector should look at, and the ideas must come from women. You see, very often policies are made by men, and I learned from my mother, who used to be a preschool educationist and early childhood expert. And she said, because the policies are made by men, they don't even think about things like a woman needs to breastfeed her child, for the first 6 months at least after birth. And so whether it was, of course, now we've, through a lot of advocacy and activism, maternity leave, etc., has been extended, there's parental leave. But when I adopted my child, and I was in government service, I was told that you don't have any benefits. And I said, an adopted child needs the same, if not more, care than a biological child. So why am I being denied? They said it's not in the rules. So again, because of, a lot of work that was done by many groups, today a mother or a father can get maternity leave or paternity leave, even for an adopted child, treated at the same. So, and if you sit, with women, you'll immediately find out what is it that their needs are, whether it's child care, whether it's breastfeeding, whether it's women in the informal sector, construction workers, farm laborers. I've talked to many such people. For example, the salt pan workers in Tamil Nadu. We have, all of us, nobody can live without salt, right? It's essential for our life. But how many of us know the salt pan workers, mostly women again, they don't have toilets. They go to work early in the morning, and they told me they don't eat or drink because they can't use a toilet for 8 to 10 hours when they're out in the sun working in the salt pans. So somehow we don't have that, little bit of, it's not compassion, it's just consideration for toilets, for facilities, for some privacy, and I think it's good that today in India, starting from the Prime Minister, we talk about things like sanitation, the need for toilets, the need for bathrooms, the need for menstrual hygiene and menstrual health products. These were all taboo. So I think we as women understand these things. We've seen these difficulties, and those of us who have a voice, should speak about this. So these are the flexibilities that private sector also needs to think. Are we treating our women workers? And just because they're contract labor and they're not permanent employees doesn't mean they don't have the same needs, that others have. So I think there are some commonalities. And then I think building the leadership skills, something like what the National Commission is doing, I think much more of that could be done in partnership with other organizations, other sectors, where we can build leadership skills. And as all the women on this panel have said, how to build that resilience so that you don't give up. It's very easy to give up. And I think all of us faced at some point of our life, should I just give this up? It's too difficult. But then you find somebody to mentor you, somebody to encourage you at that point, to give you courage, whether it's a family member or a friend or a senior. You find someone. And it's really important that we also provide that hand, to the younger people. And again, very inspired by the acid attack survivor who spoke. I see many of them in the audience today. I mean, I do hope that, again, we can take policy action like banning of acids. There are things which can be done to reduce, or to, in fact, not reduce, but it shouldn't be happening. Why should young girls or women be subjected to this, So, again, we need to listen to them, formulate those kind of policies which the government today wants to do a lot for women's empowerment. And these are some of the things that, women today are facing that we can make a difference to. Swamiji, if I can briefly ask you, because, this is a question that has
been in my mind for last 2 to 3 years, because you had a leadership role, at the WHO. Uh, what was going through your mind when the pandemic actually came in? Because people were frustrated, we had lost all hope, and you had that role where you had to answer, And now that I look back, I also criticized the WHO, I criticized China, and in many ways, people were so frustrated that they were looking for a punching bag. And WHO actually became that punching bag. But you were in that incredible role there. How challenging was that assignment in such a important historical time? And how did you overcome this kind of a mighty criticism and challenge? Yes, thank you. I mean, I think punching bag is the right word. Somebody has to become the punching bag. Somebody has to take the anger and frustration of people. So I understood that people need somebody to blame, to reduce their own tension. For me, the way that I overcame it is, let's be very focused. I mean, the first few weeks of the pandemic was a blur now. It was like a nightmare. There was, we were also under lots of pressure because not only because we were being attacked, but also because we had to do the right thing. We had to tell people what to do. And if you make a mistake, you're impacting, millions or billions of people. So my focus was really, let's get as much understanding and knowledge and let's move the science on this. Because that was something positive, practical, and it gave some returns also. Day by day, we were learning more. As I said, we had these networks. We used to run everyday calls. Luckily, thanks to Zoom, we had people from all over the world joining in. We used to every day put out updates. We had press conferences. Of course, we would be attacked. But as a chief scientist, I think was allowed to focus on the work. And it was a director general who took a lot of the flack. He took a lot of the political attacks, and he dealt with a very difficult situation. But what was, for me, the most surprising and upsetting part of the whole pandemic was that there was so much misinformation, so much of rumors, so much of fake news, so much of false information that was circulated. And this was a global phenomenon again. And I don't know what motivates these people to spread this type of information. It creates panic, it creates confusion. So as a scientist, I realized it was not enough just to do your work quietly, but you had to be out there visible. You had to communicate, because there were people putting wrong things out to the media. And this is why I also started doing quite a lot of media in order to inform people of what the real facts were. And sometimes you don't know, you have to say you don't know. Or sometimes you were wrong yesterday. That's how science is. Research teaches you something new. And it changes what you knew yesterday. You have to have the courage to say, I'm sorry, I was wrong. Or we have learned something new and I have to tell you about that. So I think it's a lesson in general on science communication, on transparency, on how we should communicate openly with people. Be humble all the time. Never think that you know everything today, because tomorrow you could learn something new, and give a voice to people. So my concern was for those people who were marginalized, who were the poorest, who did not have access to even a house over their heads. So when we said everybody, stay in your homes, unless you have a home, you can't stay in that, unless you have to earn a daily living. So there were many social issues that were also causing great concern to us. So we had to balance, what is right for society, at the same time protecting individuals. So yes, I think there's a lot of learning, but for me, the biggest learning is that if you invest in science, in research, in education, and I think I wanted to say also the previous question you had asked, I think education is the key, is the way in which women will ultimately come. And, I think we've heard from all of our speakers today that education is what empowers you and educates you, gives you the enough knowledge. But in addition to education, I think we need policies which will support women, but also leadership building.
skill development programs. Thank you so much, Somni. And thank you for your service. I don't know if you have been thanked enough, but from this platform, I actually want to thank you for this. रवि बाला जी, मैं आपसे आखिर में पूछना चाहूँगा कि हमने रवि बाला जी को तो देखा, लेकिन ऐसी हजारों रवि बाला जी घरों के अंदर हैं और उनको या तो एवेन्यू नहीं है, या तो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या तो वो प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, तो उनको आप क्या कहेंगी? और दूसरी बात मैं आपको कहूँ एज अ जर्नलिस्ट, जितना दिल्ली पर फोकस होता है, जो मानसिकता है कि मीडिया का फोकस दिल्ली पे रहता है, मीडिया का फोकस बम्बई पे रहता है, चेन्नई, बैंगलोर, कलकत्ता पे रहता है, जितना आप दिल्ली से दूर जाते हैं उतना कम मीडिया पे रेफरेंस रहता है। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, मोबाइल फ़ोन हाथ में आया है, तब से एक रेवोल्यूशन आ गया है। लेकिन तब भी हमने देखा कि कई कठिनाइयों का सामना महिलाओं को करना पड़ रहा है। तो एक जो एज है, एक वर्ग है 60 से ऊपर का, जो सेकेंड इनिंग्स आपने की ही नहीं है, आपने करके दिखाया है, अचीव किया है, और उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, आप आगे बढ़ती जा रही हैं। तो आप उनके लिए क्या कहेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगे? जैसे कि आप सबको भी पता है कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है। मैं भी जो यहाँ तक पहुँची हूँ वो उसी के थ्रू पहुँची हूँ, और अब सबके पास स्मार्टफोन है। मैं जब पहला मेरा डांस वायरल हुआ था, उसके बाद तो मैंने देखा कि मेरी एज के और मेरी एज से और भी बड़े और मेरी एज से छोटे भी डांस डालने शुरू कर दिए उन्होंने। और जैसे मैं यहाँ तक पहुँची, ऐसे ही मैं कलर्स टीवी पे डांस दीवाने तक पहुँची। वहाँ मैंने देखा कि ऐसे इसी जगह से इंटीरियर से लोग आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे, जिनको जो अपनी कला को कहीं नहीं दिखा पाए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुझे भी कई जगह मिली। तो मैं सिर्फ डांस दीवाने में गई थी और वहाँ जाके मैंने अपना कला को दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि उस जगह तक ये लोग जाते हैं। सोशल मीडिया के जैसे चैनल जगह जगह ये खुले हुए हैं, हमारे कलर्स टीवी का या सोनी है, जो भी है, जो ये प्रोग्राम करते हैं, तो ये लोग पहुंचते हैं, वहां से लेकर के आते हैं उन कलाकारों को और टीवी पर दिखाते हैं। तो मैं भी काफ़ी हद तक वहाँ से उठी हूँ। पहले तो सोशल मीडिया पर ही थी, उसके बाद डांस दीवाने में पहुँची। वहाँ मैंने माधुरी जी के साथ डांस किया। कितने कोरियोग्राफर्स को जो मैं नहीं जानती थी, वो लोग मुझे जानते हैं, मैंने उनको जाना। और मैं उनको वही कहूँगी कि अपनी कला, चाहे वो जो भी प्रतिभा है, उसको अपने परिवार के साथ शेयर करो और उनको बताओ कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, तो परिवार वाले उनके साथ खड़े हों। ऐसा नहीं, क्योंकि हर एक के अंदर जो प्रतिभा होती है उसको अगर घर के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करा जाएगा। तो उसी के सिलसिले में एक मैं अपनी ही बताती हूँ कि जब मेरे फादर ने मुझे क्लासिकल वोकल सिखाया, तबला सिखाया, सितार सिखाया, तो मैं जब स्टेज पे प्रोग्राम देती थी तो क्लासिकल ही गाती थी, तबला बजाती थी, सितार बजाती थी, लेकिन मन में कहीं मेरे रहता था कि मैं डांस नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पिताजी को था कि बॉलीवुड के सॉन्ग पे डांस नहीं करोगी, तो वो मेरा अंदर कहीं छुपा रहता था। तो जब मैं कॉलेज में थी, कॉलेज में मेरे फादर क्लासेस लेते थे, तो उन्होंने मुझे बोला घर में कि कंपटीशन होने जा रहे हैं, तो बॉलीवुड के सॉन्ग्स पे कंपटीशन होगा। तो मेरी मदर को बोला कि इसको मना कर दो, ये वहाँ पे कंपटीशन में नहीं जाएगी, अपना जो भी है वो क्लासिकली प्रोग्राम देगी। मैंने सोचा कि मेरा तो मन करता है डांस करने को, तो मैंने सोचा पिताजी तो घर में होंगे, कॉलेज में उस समय आ नहीं रहे, तो जो 0 पीरियड होता है उसमें मैंने तैयारी शुरू कर दी और बच्चों को, जो मेरी फ्रेंड्स थी, उनको इकट्ठा किया और डांस तैयार कर लिया। घर में मम्मी बोली मेरी कि तुम डांस तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो उसमें। मैंने बोला नहीं, मैं उसमें नहीं करूँगी, मैं राग गाऊंगी जो पिताजी ने सिखाया। तो बोली ठीक है, कोई नहीं है। तो मैं तैयार किया, मैं ना उस दिन पहुंची अपने फ्रेंड्स के साथ में वहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। वहाँ गई मैं, तो मैंने देखा सामने पिताजी जजमेंट कर लिए बैठे हुए थे और मेरी सिटी पिटी गुल कि क्या करूँ पिताजी सामने
बैठे हुए। तो ये चीज़ ना कि जो अगर आपके अंदर है उसको करने दो, जो भी कला है, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, गाना बजाना, जो भी है, तो उसको सपोर्ट करो। शायद वो सपोर्ट करते मुझे तो मैं उन घर में बता के और खुलेआम करके आती। मुझे अंदर डर नहीं होता कि वहाँ पिताजी मुझे दिख गए और सामने बैठ गए तो मैं क्या करूँ। मैंने बोला, जो मेरे साथ के बच्चे थे, पहले तो मैं फ्रंट आगे की रो में थी, मैं पीछे चली गई कि मैं पीछे शायद कम दिखूंगी, और मैंने पीछे खड़े होकर कह रहा, तो जो सीक्वेंस में डांस तैयार किया था वो सारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैं ही लीड कर रही थी उसको, डांस को। तो मैं ही कहूँगी कि घर में स्टार्टिंग तो घर से ही होती है, तो घर में पेरेंट्स सपोर्ट करें, भाई बहन सपोर्ट करें, हस्बैंड सपोर्ट करें, बच्चे सपोर्ट करें। जैसे मैं यहाँ तक पहुँची तो मेरे बच्चे दोनों, मेरी बेटी और बेटा, मेरे को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ही मेरे को बोला कि मम्मी, आपका जो रहता था कि मैं डांस करूँ, क्योंकि मैं डांस करती थी जब भी, मेरे हस्बैंड भी खड़े होकर चुप करके देखते थे कि हाँ मेरी बीवी डांस कर रही है और बहुत बहुत अच्छा कर रही है, खुश होते थे। इन लॉज, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे घर भी पर्दा सिस्टम था, तो मेरी मदर इन लॉ बहुत खुश थी कि मेरी जो बहू आई है उसको गाना बजाना, डांस करना सब कुछ आता है। कहीं भी जाती थी मैं, तो जो आसपास में गाने, शादी वगैरह होती थी, तो हारमोनियम मेरे आगे रख दिया करती थी कि ये बजा लेगी, ये ढोलक बजा लेगी। तो मुझे अच्छा लगता था कि वो इतने खुश हो रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं कि भाई इसको आते हैं, तो प्राउड तो फील करते हैं, लेकिन समाज के डर से आगे नहीं बढ़ने देते और ना खुद बढ़ते हैं। तो हमें पहले तो, और समाज क्या है, हम ही तो समाज हैं, हमें उस चीज को चेंज लाना है कि जो भी कला है आपके अंदर, डांस कोई बुरा नहीं है, एक कला है। आप अपनी भावनाओं को अपने भावों के द्वारा दूसरों के सामने व्यक्त कर रहे हो। अब तो इतनी डांस के फॉर्मेशन हो गए हैं, जो नए नए हैं, मैं तो उनको भी सीखने की कोशिश करती हूँ। जो बच्चे डालते हैं सोशल मीडिया पे, जो रील डालते हैं, तो मैं उनके एक्शन सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है। जो मैं कर सकती हूँ, तो मैं उनकी स्टेप करती हूँ, लेकिन उतने क्लियर नहीं कर पाती, तो सोचती हूँ नहीं ये वाला छोड़ दो क्योंकि इतना क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं क्यों पुराने वाले करूँ, जो आजकल जो बच्चे कर रहे हैं उसको भी देखूँ और उसकी रील बनाऊँ। तो अगर मन में जज्बा है, ईमानदारी है और लगन के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम कर जाएंगे, कहीं कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमें उस समाज को बदलना है जिन्होंने एक ये बना लिया है कि इसके बाद महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, ना डांस करेंगी, ना गाना गाएंगी। क्यों? अगर हमारे अंदर प्रतिभा है तो हम उसको करेंगे। और मैं वही कहूँगी कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम इस कला में आगे बढ़ें, तो बहुत फैसिलिटी, और मैं तो बल्कि चाहती हूँ कि मेरे पास आए, मैं सिखाऊं। जो मेरे पास कला है मैं उनको दूं, चाहे वोकल हो, और कोई ऐसे नहीं मैं क्लास लेती रहूं और सिखाती रहूं। जब तक मैं कर रही हूँ डांस और मेरा शरीर साथ दे रहा है, मैं तब तक करती रहूंगी और डालती रहूंगी उस सोशल मीडिया पे, डांस भी, गाना भी, तबला भी। और आप सबसे कहूंगी कि आप लोग भी समाज से मत डरो, क्योंकि अपना जो पैशन है, जिससे आपको संतुष्टि मिलती है, तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आती है कि आप खुश रहोगे। आप खुश हो तो सब कुछ ठीक है, आप दुखी हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दुखी इंसान तो वैसे भी संगीत को, गाने सुनेगा, डांस देखेगा, खुश होगा। तो एक अपने आप को स्वस्थ रखने के का भी जो है, संगीत बहुत बड़ा एक मेडिसिन है कि आप परेशान हो, संगीत सुनो, डांस देखो, तो आपके अंदर जो भी पैशन है, तो मैं बच्चों को बोलूँगी जो पैशन है आप ईमानदारी से, लगन से करो और डरो नहीं, और हम ही हैं जो समाज को बदलेंगे। रवि बालाजी, लेकिन एक बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानता आपकी जो रील है वो आजकल के बच्चों से ज़्यादा अच्छी है। So thank you very much to everyone. Thank you so much to these 6 incredible women who have been here. PT Usha could not be here because of a meeting, but बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत प्रेरणा मिली, इनका एक्सपीरियंस जानने को मिला, और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है आप सबको, और आगे भी मुझे लगता है कि इनकी जर्नी कैसे रहेगी वो सबको देखने को बहुत ही मिलेगा। और थैंक यू वेरी मच टू रेखा शर्मा जी, टू NCW फॉर दिस इवेंट, एंड keep having these leadership conclaves, and congratulations for the 31st Foundation Day. Thank you so much.
जय हिंद।